lecture number 14, a digital signal processing course, spring 2021. We were discussing in the last lecture about inverse Z transform. So hopefully you got the idea about the inverse Z transform. We discussed three methods, primarily by inspection method, partial fraction method, and power series expansion method. And we solved a couple of examples to clarify the concept. Today we are going to discuss uh, properties of the Z transform, and that would be the last topic of chapter number 3. Uh, there are 6 7 properties, so let's start with the first property. The first property says that Z transform, like Fourier transform, is a linear operation. What does mean by a linear operation? A linear operation means that Z transform also satisfies the properties of scaling and additivity. And in short, Z transform supports principle of superposition. You know that for a linear system, they must support the principle of superposition. So in superposition, you have two properties, scaling and additivity. So let's solve an example to further clarify the concept. So let's assume that we have x of n with uh, Z transform x of z, and their ROC is R of x, right? Consider x of n as 0.52 raised per n u of n. If you see their Z transform, it is 1 over 1 minus 0.5 Z inverse by the inspection method. We already have this pair. And their ROC is Z mod greater than 0.5. One difference you can notice from these two first line is that in DTFT we are not concerned about the condition, but now here in Z transform, along with Z transform expression x of z, there should be a region of convergence expression like Z mod greater than 0.5. So because we when we solve this uh, linearity, sorry, causality and stability example in which we have three poles A, B, and C without a region of convergence, we have four possibilities. And you know that if you check the Z transform expression of all four cases, Z transform expression was same. However, the region of convergence are different. If you remember, we have A, B, and C poles, and if all sequences are right-handed sequences, ROC will be Z mod greater than C. And if all the sequences are left-handed sequences, then region of convergence would be Z mod less than A, right? And if A and B are right-handed and C is left-handed, then Z mod greater than B and Z mod less than C, right? So the only distinguishable thing is the region of convergence. So that's why whenever you see the properties of Z transform anywhere in your book or on internet, you will find region of convergence along with Z transform expression. So we know that if we have x of n, their Z transform expression would be x of z along with ROC is equal to R of x. So it's 0.52 raised per n u of n, x of z is equal to 1 over 1 minus 0.5 z inverse, z mod greater than 5. If let's consider another sequence, 3 dot 0.5 to raise per n u of n. So what we are trying to do here, we are trying to support the linearity property through scaling factor. So we have alpha scaling factor. So we know the Fourier Z transform of 0.5 to raise per n u of n is 1 over 1 minus 0.5 z inverse, right? And if we scale x1 of n, this 0.5 to raise per n u of n by a factor alpha, the Z transform would also be scaled by alpha. However, you see here ROC will remain same. So by scaling, the region of convergence is not getting changed. By only scaling, the region of convergence is not getting changed. So when you multiply it by 3, the Z transform expression would also be multiplied by 3. So 3 dot 0.5 to raise per n u of n is equal to 3 dot 1 over 1 minus 0.5 z inverse. However, the Z transform expression would remain same. Similarly, if we take another sequence x2 of n and we scale it by a factor of beta, the Z transform expression would also be scaled by beta.
and the region of convergence would remain same. For example, if we take the Fourier, let me copy it once again. If we take Fourier Z transform of 0.5 to raise power n u of n, it would be 1 over 1 minus 0.75 z inverse, and their z transform expression would be like this. Z mod greater than 0.75, right? When you scale it by 2, beta is equal to 2, you see that the n domain expression would also be multiplied by 2, and z transform expression would also be multiplied by 2, and their zeta region of convergence would remain same, right? Now next is the additivity property. So let me write it here, scaling, and let me write it additivity property, and together let me use different color, so that get you will not get confused why we have three headings for a same property. This is additivity property. Additivity. So what you know that for principle of superposition you need to support both scaling and additivity. So in additivity property, let's we assume that we have another sequence x3 of n, which is the sum of alpha x1 and beta x2. The z transform would also be the additive of alpha x1 of z and beta x2 of z. However, now you see the difference. The ROC would be Rx1 intersection Rx2. So whenever you are adding two sequences, their z transform expression would be addition of these two individual z transform, but their region of convergence would be the common region. And you know the common region, how to find out the common region, you just need to take the intersection of the both ROC. Let's solve it with the example of uh, same two sequences, 0.53 dot 0.5 to raise per n u of n and 2 dot 0.5 to raise per n u of n. So let's x3 of n would be equal to 3 dot 0.5 to raise per n u of n plus 2 dot 0.75 to raise per n u of n. Z transform expression would also be addition of this one and this one simply, but the region of convergence is the intersection. So z mod greater than 0.5 intersection z mod greater than 0.75. So आपके पास एक जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आ रहा है वो 0.5 से इन्फिनिटी आ रहा है और दूसरा 0.75 से इन्फिनिटी आ रहा है, तो व्हाट वुड बी द कॉमन रीजन? 0.75 to infinity. Yeah, 0.75 to infinity, that's the right answer. So your final ROC would be z mod greater than 0.75, right? So hopefully uh, the concept is now clear to you, that how to find out for the scaling and additivity property in a linear form. ठीक है बेटा, any question, any confusion? We started from here, in which we solved to just take a hint that x of n would have a z transform x of z and ROC is equal to R of x, and then we build up the concept of scaling and additivity with the examples. So hopefully the concept is clear to you, right? So what is the advantage of linearity property? If we see it from a practical perspective, so you can see here that x3 of n is basically the sum of two independent sequences. So as I said earlier, in a case of DTFT linear operation, we said that if we have a large sequence or large signal, we can break that signal into the parts, and then we can calculate the Fourier transform of the parts, and in the end through additivity property we can add them to get the final result. So same concept here. If you have a large sequence that is running from 0 to infinity, for example 0 to infinity, so you can break it into chunks and you can
find out the Fourier Z transform of individual chunks, and then you can finally add to get the final answer. uh, or for example, if you have some system who have two inputs, so आप inputs को add करके apply कर सकते हैं अगर वो individually inputs add हो रहे हैं toward the system, because we are more concerned about signal in the system. So if we have uh, IAR system that is a combination of multiple subsystems, so हमें पूरे system जो complex system है उसका complete Fourier Z transform लेने की जरूरत नहीं है. What we need to do, we can take the Z transform of individual subsystems and then we can add, because Z transform supports additivity. आखिर में हम ऐड करके फाइनल Z ट्रांसफॉर्म एक्सप्रेशन और ROC निकाल सकते हैं, बिकॉज हमने देख लिया कि Z transform expression is simply the addition of independent systems and their ROC would be a common region. And how to find out the common region? You just need to take the intersection of the common region, right? ठीक है Yes, बेटा? sir. Okay, the second property is the time shifting property. Time shifting property says that if you have x of n and you know its Z transform and their ROC is equal to R of s, if you try to shift that signal in time domain, so their Z transform expression would be x of z, but there is an additional complex exponential z to raise power minus n naught will be multiplied with this x of z. तो अगर दोनों एक्सप्रेशन को देखें तो हमारे पास जब टाइम में हम डिले दे रहे हैं तो हमारे पास डिफरेंस क्या आ रहा है, हमारे पास x of z के साथ z टू रेज पर माइनस एन नॉट मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट? सो लेट मी डू वन मोर स्टेप विद दिस वन. अगर हम इसको देखें तो आई कैन राइट दिस एज 1 over, let me write here 1 over z to raise power n naught. And I can remove this. Agree करते हैं इस बात से? Yes, sir. Both expression are same. What would be the difference? Let me give one statement. Whenever you shift a signal in time domain, it would not change the stability index or the location of pole all region of convergence. So आप किसी कोई भी definition ले सकते हैं, because region of convergence directly depend on the location of a pole. तो अगर location of a pole change होती है तो region of convergence भी change होगा. और आप stability कैसे find out कर रहे होते हैं? आप location of the poles की base के ऊपर stability find out कर रहे होते हैं. So these three terms are interchangeable. So you can say whenever you shift a signal x of n in time domain by a factor minus n naught or plus n naught, your Z transform expression would be changed like this. So let's take another perspective. अगर हम इसको ये कर देते हैं x of n plus n naught, although that is not practically possible, but still with Z transform expression it is possible. So what will happen in that particular case? Now you have Z naught to raise power control C. This is multiplied with this naught, right? And their ROC would remain same. Agree करते हैं इस बात से? So what's the difference? Now here we are time delay, here we are time advance. So let me write it over here explicitly so you did not get confused. So time delay and time advance. एक में आपके पास delay दे रहे हैं और एक में आप advance कर रहे हैं. So that's how your property would change. Normally time advance, change the color again and let me use comment. ठीक है बेटा, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? So it's clear. No, sir. Okay, so ROC will remain same. However, अगर आप whenever you read your book, there is one sentence written over here. Let me make it little bit zoom.
So one sentence written on your book that ROC is equal to R of X. It means that there is no change in the region of convergence. However, there is some addition or deletion of zeros at z is equal to 0 or z is equal to infinity. So what does mean by this possible addition or deletion of 0? So if you see here, what does mean by z to raise power n naught? Let's assume n naught is equal to 2. So it would be a z scale. So it would be a second order 0 at z is equal to 0. Right? So अगर आपका यहाँ पे पहले से कोई पोल है तो possible of addition or deletion of zeros at z is equal to 0 और z equal to infinity. तो यहाँ पे आपके पास जीरो के ऊपर सेकंड ऑर्डर जीरो ऐड हो जाएगा, मीन आपके पास दो जीरो ऐड हो जाएंगे z is equal to 0 पे. लेकिन अगर आपका 1 ओवर z टू रेज पर n नॉट है तो ये क्या बन जाएगा, ये अब आपके पास एक किस्म का z is equal to 0 के ऊपर पोल बन जाएगा, बिकॉज योर न्यूमरेटर आर गिविंग यू दी zeros and denominators are given you the poles. तो जब आप डिले दे रहे हैं तो इट इज z टू रेज पर माइनस n नॉट, एंड z टू रेज पर माइनस इन n नॉट इज एक्चुअली 1 ओवर z टू रेज पर n नॉट. एंड इफ यू सी दिस वुड बिकम अ पोल. और आपका क्या होता है, अगर सेम लोकेशन के ऊपर पोल्स और जीरो हो तो वो एक दूसरे के इफेक्ट्स को कैंसिल कर देते हैं. ठीक है. तो कंसेप्चुअली अगर हम एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे देखें तो जब हम टाइम डिले देते हैं तो वी डोंट नीड टू वरी एनीथिंग. सिर्फ हमारा z ट्रांसफॉर्म एक्सप्रेशन में z टू रेज पर माइनस एन नॉट मल्टीप्लाई हो रहा है और हमारा ROC चेंज नहीं हो रहा. ठीक है. दिस इज इनफ concept with respect to the example you will solve in your book or the end problem you solve in your book. However, in order to understand that what does mean by a possible addition or deletion of 0 at z is equal to 0 or z is equal to infinity, so you can directly see here if we have a time advance, so we are multiply with z to raise per n naught, and this is in numerator, so this would be addition of zeros, and this is a uh, whole at z is equal to 0. So if there is some 0, it will cancel or delete that 0. So that can be true from this example, and we can easily understand this situation. If not, let me give you another perspective. So let's solve first solve an example, then I'll come back to the same point again. So let's assume we have x of n is equal to 0.52 raised per n u of n, and we know its z transform expression is 1 over 1 minus 0.5 z inverse with ROC is equal to z mod greater than 0.5. If we delay it with a factor of 3, n naught is equal to 3, we are giving delay. So what would happen in z transform? X of z multiplied by z to raise power minus 3, because now we have n naught is equal to 3. So this is multiplied by z to raise power minus 3, right? So final expression would be z to raise power minus 3 over 1 minus 0.5 z inverse. As I said earlier, ROC will remain same except addition or deletion of possible zeros at z is equal to 0 or z is equal to infinity. If we see this expression, so this is similar, 1 over z cube 1 minus 0.5 z inverse z mod greater than 0.5. ठीक है बेटा, एग्जाम्पल क्लियर हुई है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now let me give you first condition and then I'll come back to this example again. So what is condition? Condition is saying that if there exists a pole at, if pole and zero exist on the same location, they will cancel their effect on the given system. A pole and zero pair on the same location will cancel each other. कैसे? अगर आपके पास एक्सप्रेशन हो 1 माइनस 0.5 जी इनवर्स और 1 माइनस 0.5 जी इनवर्स, सो ये आपके पास पोल भी जीरो के ऊपर 0.5 पे आ रहा है और जीरो भी 0.5 के ऊपर आ रहा है. सो लेट मी चेंज द कलर, let me make it red. So this is your 0, or let me make the pole with which color, let make it green. तो आपका पोल जो है वो ग्रीन कलर का है और आपका जो जीरो है वो आपका रेड कलर. ठीक है. तो अगर आपके पोल एंड जीरो सेम लोकेशन पे हो तो वो क्या करते हैं, अब आप देख लें कि 1 माइनस 0.5 जी इनवर्स और 1 माइनस 0.5 जी इनवर्स, सो दिट विल कैंसिल, आंसर वुड बी इक्वल टू 1. ऐसे ही है बेटा? Yes, sir.
तो अगर सेम लोकेशन पे हो तो वो आपके पास एक दूसरे के इफेक्ट्स को कैंसिल कर देते हैं। अब बेस्ड ऑन सेम प्रिंसिपल अगर आपके पास ऊपर भी जी आ रहा हो, लेट मी फर्दर सिंप्लीफाई दिस, अगर एक्सप्रेशन आपका लेट मेक वेरी क्लियर, अगर आपका एक्सप्रेशन हो z ओवर z क्यूब z स्क्वायर कर लेते हैं। अगर एक सिंपल आपका एक्सप्रेशन इस तरह का आ रहा हो, और चलें इसके साथ हम मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, 1 माइनस 0.5 इनवर्स और हम एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं, नीचे हम 1.6 कर देते हैं ताकि वो अब कैंसिल ना हो, सिर्फ z वाला कैंसिल हो। सो यहाँ पे हम 6 कर लेते हैं इंटेंशन। अब देखें इसका रिजल्ट क्या होगा, दिस वुड बी इक्वल टू, इसको हम यूं लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, ये जी से कैंसिल हो जाएगा तो एक पावर आपकी कैंसिल हो जाएगी, ऐसे ही है बेटा, ऐसे ही हुआ है बेटा। यस सर। ऐसे ही हुआ है ना। तो Yes, sir. लेट्स तो यहाँ पे आपका क्या हुआ है, दिस इज पॉसिबल डिलीशन ऑफ जीरो। तो यहाँ पे आपका एक जीरो डिलीट हो गया, क्यों, बिकॉज ये आपका 2 का डिले आ रहा था, ये पता है, क्योंकि ये जी स्क्वायर, लेट मी मेक इट मोर क्लियर, अगर हम इसको कंट्रोल, मैं पहले इसको यूं रखता हूँ, हम इसको फर्दर एक स्टेप और कर लेते हैं। हमारे पास ये आ रहा था इनिशियल, जो हमारे पास जी ट्रांसफॉर्म था, अगर हम इसको 2 का डिले दे दें एक्स ऑफ एन को, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जी if we make it a delay of 2 units, so it would be z to raise पर -2, अगर हम 2 का डिले दे दें बेटा तो यही आ जाएगा, बाकी z ट्रांसफॉर्म सेम रहेगा, यहाँ पे आपके पास z -2 आ जाएगा, एंड दिस z -2 इज इक्वल टू, दिस वुड बी z स्क्वायर। एग्री करते हैं, एंड नाउ इसको आप इक्वल कर दें, you can delete this here and you can delete this. So now I think you got the idea what will happen when you delete, when multiply by a 2 unit. So this would be multiplied by z to raise for -2, and z to raise for -2 would become z square at the denominator. So this will cancel with z and you will left with this expression. So here you can see that deletion of 0 happened here. ठीक है बेटा। Yes, sir. तो आंसर आपको समझ में आ गया कि व्हाट डज मीन बाय एक्सेप्ट पॉसिबल डिलीशन और एडिशन ऑफ 0 at z equal to 0 or z equal to infinity। ठीक है बेटा। तो अब Yes, हम sir. इसको Yes, सिंपलीफाइड वर्जन sir. हम ये कहते हैं कि जब आप टाइम में किसी चीज को डिले देंगे तो सिंपली आपका एक z टू रेस पर -n अगर डिले देंगे, अगर आप एडवांस देते हैं तो z टू रेस पर पॉजिटिव n नॉट मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ROC आपका सेम रहेगा, ROC चेंज नहीं होगा। तो अगर हम इसको डिफाइन करें विद रिस्पेक्ट टू द स्टेबिलिटी इंडेक्स, तो वी कैन से टाइम शिफ्टिंग, टाइम डिले की वजह से आपकी जो सिस्टम है उसकी स्टेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिस्टम स्टेबल रहता है। अब हम इसको देखते हैं एक एग्जांपल में, देखें जब आप कॉल मिलाते हैं अपने सेल फोन से तो आपका सिग्नल टावर के पास जा रहा होता है, फिर टावर टू टावर जा रहा होता है, और इस तरह फॉर एग्जांपल अगर हम इस्लामाबाद से कराची में कॉल मिलाते हैं कोई मोबाइल के थ्रू, तो पहले आपके मोबाइल से सिग्नल जाएगा इस्लामाबाद के टावर पे, फिर इस्लामाबाद से होता हुआ फॉर एग्जांपल एक कोई 50 100 या 130 टावर्स को चलता चलता फिर आपकी कॉल
फाइनल टावर तक जाएंगे और फिर टावर से फिर आपका जो रिसीवर होगा वहां तक जाएंगे। ठीक है, अब जब आपकी का सिग्नल आपके मोबाइल से टावर पे जाएगा तो वो जीरो टाइम में नहीं जा रहा होता, वो डिले के साथ जा रहा होता है। ठीक है, सो देयर वुड बी सम माइनस एंड नॉट एंड माइनस एंड नॉट, एंड दैट माइनस एंड नॉट वुड बी इन मिली सेकेंड। अगर हम 4G की बात करें तो दैट वुड बी अप टू 50 मिली सेकेंड, तो आपका 50 मिली सेकेंड का डिले आएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख लें 50 मिली सेकेंड के डिले आने से सिस्टम की स्टेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा और ना ही डेटा की इंटीग्रिटी पे फर्क पड़ रहा, राइट? So hopefully with all this discussion, example and clarification, explanation, the concept is clear to you. ठीक है बेटा? Yes, sir. ठीक है, so Yes, sir. let's move to the example that is given in your book. That is example 3.14. Shifted exponential. So here you see your expression is given x of z 1 over z minus 1 by 4. So, but this is not in the standard form, because our standard form says that a of n u of n is Fourier z transform would be 1 over 1 minus a z inverse with z mod greater than a. Right? So z mod 1 over 1 minus a z inverse z mod greater than a. However, here z transform ROC expression is okay, but when I see this expression, so this is in the form of z, not z inverse. So our first step is to convert it into the standard form so that we can apply this pair to solve the problem. तो ये करने के लिए आप क्या करेंगे, अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें 1 over z minus 1 by 4, so you can take z common from the denominator. Right, so you can take z common from the denominator, and it would be 1 minus 1 by 4 z, because there is no z here, so you will left with 1 minus 1 by 4 z. ये z आपका ऊपर चला जाएगा, सिमिलरली ये आपके पास ऊपर जाके z minus 1 हो जाएगा, तो दिस वुड बी z minus z inverse over 1 minus 1 by 4 z inverse. क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Just need to take z common from the denominator, so it would become same expression z inverse over 1 minus 4 z inverse, right? So अगर हम इसको ये सॉल्यूशन आपकी बुक में ये दिया हुआ है, बट देयर इज अनदर सॉल्यूशन जो पहले हम वो कर लेते हैं, फिर हम इस पे आएंगे कि इसने कैसे फाइंड आउट किया। अब देखिए आपके पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है ए टू रेज पर एन यू ऑफ एन हो, तो हमारे पास 1 over 1 minus a z inverse z mod greater than a। अगर हमारे पास वन टाइम यूनिट का डिले आ जाए a to raise पर n minus 1 u of n minus 1, so this would be z inverse dot 1 over 1 minus a z inverse। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो that is exactly similar to this one। So based on this I can write this in this form, z inverse dot 1 over 1 minus 1 by 4 z inverse। So sorry, here written 1 by, let me use the pen, so this is not 1, this is actually 1 by 4, this is 1 by 4 dot this is z inverse। ठीक है, क्लियर है या मैं इसको दोबारा लिख दूं? क्लियर है बेटा? Yes, sir. So you can write you have z inverse dot 1 over 1 minus 1 by 4 z inverse। So पहले हम 1 over 1 minus 4 z inverse इसका z ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं, तो that would be 1 by 4, 1 by 4 is basically 0.25, 1 by 4 to raise by n u of n। अब इस z इनवर्स की वजह से क्या आ रहा है, एक का डिले आ रहा है, तो यू कैन मेक है -1 -1। So this is your right answer। ठीक है बेटा? Yes, sir.
if you're getting confused, so let me wait a minute. Put it in next page. So let me solve here clearly so you won't get confused about it. So let me copy. We have Z inverse dot 1 over 1 minus the 4 Z inverse 4 1 1 by 4 Z inverse, right? So if we take the Z transform of, we don't know the exact ये हमने find out करना है, right? ठीक हो गया, दूसरा काम इसको ले जाते हैं. हम पहले ले लेते हैं 1 over 1 minus 4 Z inverse, इसका Z transform find out करने की try करते हैं. We already know that this is very easy. 1 by 4 to raise power n, 1 by 4 to raise power 4. Raise power n and u of n. एग्री करते हैं सारे. इसका हमारे पास जो Z ट्रांसफॉर्म आएगा, इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म, that is 1 by 4 to raise power n u of n. And now we copy again and multiply it with Z to raise power minus 1. And we know when we have Z to raise power minus 1 multiplied in Z domain, it's mean that there is n minus 1 here and u of n minus 1 here. ठीक है. And और डिले की वजह से आपको ROC फर्क नहीं पड़ता, so this would be Z mod greater than 1 by 4. Let me copy it. One by 4 is 0.5, so allow me to write 0.5. I don't need to do more modification. 1 by 4. You can copy here, you can copy here, you can copy. Hopefully it is clear now. ठीक है बेटा? Yes, sir. So this solution is also true, but let's see what your book have done here. So now what he has done, he said that since the degree of numerator and denominator is same, so you need to divide it. तो आप क्या करें, न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर के साथ. तो जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगी और लेट्स यू विद लेफ्ट रेस्ट आपके पास जो डिग्री होगी न्यूमरेटर की वो आपकी कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगी. जी इनवर्स के बजाय आपके पास कांस्टेंट टर्म आ जाएगी. नो, इट्स परफेक्टली ओके. सो what would be the Z transform expression for minus 4? So you know that Z transform for a constant is delta of n. So if you take the Z transform of delta of n, it is 1. So here we have a minus 4. It's mean that this is minus 4 delta of n. And 1 over 1 minus 4 Z inverse, we know that is 1 by 4 to raise power n u of n. And this 4 is simply multiplied with it. ठीक है बेटा? ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Any confusion, any question? No, sir. No, sir.
Okay. No, So sir. this let's move to the third property of Z transform, and that property says uh, multiplication by a complex exponential. So multiplication by exponential property is again important one, and it will change the stability index as well. So let me write here as well. Let me make it green. Let's make it. So what this property says that if you have x of n and you know its Z transform x of z and region of convergence R of x, if you multiplied x of n in time domain by z naught to raise power n, it's similar to the multiplication by a complex exponential e to raise power j omega naught. So your Z transform expression would be changed by z over z naught. Mean wherever you have a z, you will divide z by z naught, and your ROC will also be multiplied by this z naught expression. Okay? So from here we can see that whenever you multiply a sequence with a complex sequence z naught to raise power n, their region of convergence would be changed, because now region of convergence Rx multiplied by Z naught, of course the value would change and your stability index would change. What would be the effect in Z transform expression? It's simply x of z over z naught. So let's solve an example to clarify the concept. So let's take the same example, 0.5 to raise power n u of n. Its Z transform would be 1 over 1 minus 0.5 z inverse with z mod greater than 0.5. So in this case, we have a pole at 0.5 and ROC would be outward, the outermost, outward the pole, location of the pole. So here we can see that Z mod greater than 5 is basically a stable system, because your ROC is containing unit circle. Anyway, your Z mod greater than 0.5. Let's take Z naught is equal to 1 by 4. Let's take Z naught is equal to 1 by 4. So we are multiplying 1 by 4 to raise power n with this expression 0.5 to raise power n u of n. तो जब आप z नॉट 1/4 टू रेज पावर n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या? इनिशियली आपके पास क्या था? 0.5 टू, लेट मी कॉपी इट अगेन, add one more step for further clarification, and z mod greater than this one, right? So what will happen now? Initially we have 0.5 to raise power n u of n. When we multiply it with z naught to raise power n, our z transform expression would be z over z naught, and our z naught is 1/4. तो जहां पे भी हमारे पास z naught आएगा, हम इसको डिवाइड कर देंगे 1/4 के साथ. तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इस एक्सप्रेशन में z सिर्फ यहाँ पे आ रहा है. ऐसे ही है बेटा, we have z inverse here only. ऐसे ही है. Yes, sir. तो हम क्या करेंगे, हम इस z को लेंगे, इनवर्स को हम इग्नोर कर देंगे, हम z को लेंगे, इसको 1/4 से डिवाइड कर देंगे. दैट वी हैव डन हियर. तो z ओवर 1/4, एंड ये इनवर्स आपका बाहर आ गया. एंड व्हाट विल हैपन एट the region of convergence? We will multiply this z mod greater than 0.5 with z naught expression, right? So यहाँ पे let me copy this once more. इस expression से पहले मैं ये multiply कर देता हूँ. This will further improve the clarity. जब आप इसको z mod raise power n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ROC z mod से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो यहाँ पे देखिए z mod हमारे पास क्या आ रहा है, 1/4. तो हम 0.5 को 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, z mod का जो एक्सप्रेशन आ रहा था z ट्रांसफॉर्म का, हमने z और z नॉट कर दिया. तो जहाँ पे z आ रहा है हमने z को 1/4 से डिवाइड कर दिया. अब नेक्स्ट जॉब ये है कि हमने इसको सिंप्लीफाई करना है. तो और एक्सप्रेशन वुड बी 1/4 टू रेज पावर n, 0.5 टू रेज पावर n u ऑफ n. इट वुड बी 1 over 1 minus 0.5. z over 1/4 क्या हो जाएगा, 4z. a over b by c क्या होता है, a over b by c. What would be the answer of
A over B by C. AC over B. AC over B. Right, so A B by C आंसर होता है A C over B. So that's what we are doing. तो हमारे पास जो C है वो ऊपर चला जाएगा, तो C हमारे केस में 4 है, तो this would be 4 Z inverse. ठीक है. In the next step Yes. आपके पास ये आ जाएगा 1 माइनस, अब 4 Z इनवर्स है तो 4 का इनवर्स आ जाएगा और Z का इनवर्स आ जाएगा. कैन आई राइट दिस लाइक, चले मैं इसको ऊपर ही स्टेप पे कर लेता हूँ, यहाँ पे कर लेते हैं, एक स्टेप हम एक्स्ट्रा कर लेते हैं. तो दिस वुड बी 4 इनवर्स 4 टू रेज पावर 1. एग्री करते हैं इस बात को, और Z टू रेज पावर -1. ठीक है बेटा. Yes, sir. 4 का इनवर्स क्या होगा 1/4 और Z आपके पास एज इट इज आ जाएगा. राइट, सो 0.5 डिवाइड बाय 4 ये करें, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? .125. Yes, sir. So that is your final answer. 1 minus 0.125 Z inverse, Z mod greater than 0.125. अब देखिए आपकी लोकेशन ऑफ पोल कहाँ, पहले क्या था Z mod greater than 0.5. अब आपका 0.5 से पोल शिफ्ट हो गया 0.125. तो इस केस में तो स्टेबिलिटी, पहले भी स्टेबल सिस्टम था, अब भी स्टेबल सिस्टम है, तो कोई चेंज नहीं आया. लेकिन देयर माइट बी अ केस इन विच योर सिस्टम वुड बिकम अनस्टेबल. Your system will become unstable. Try to first of all tell me the concept is clear to you. Any confusion? No, sir. No, sir. No, sir. चलिए फिर आपने प्रैक्टिस में आपको एक दे देता हूँ प्रॉब्लम. यहाँ पे हमने Z0 1/4 लिया था. Let me give you a practice problem. ये आपने खुद करना है और फिर मुझे बताना है स्टेबिलिटी के बारे में. अगर हम सिंपली इसको कर दें 3 to raise पर n u of n, फिर आपने मुझे एक्सप्रेशन फाइंड आउट करके देना. फाइंड Z transform of, let's assume हम इसको लेते हैं x of n, this one, and comment on stability. जी आप बताएंगे इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा? Sir, it will be Z by 3 inverse. लाइक एक मिनट मैं इसको कॉपी पेस्ट करूं. चले मैं यहीं से कर लेता हूँ इसको. कंट्रोल सी कंट्रोल वी. इसका आंसर मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ, फिर आप इसको सॉल्व कर लें. तो इट वुड बी 1 over, let me write the expression 1 over, अब 3.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस वुड बी 1 minus 1.5 Z inverse, and your region of convergence would be Z mod greater than 0.5, 1.5, sorry, and your Z transform is, try to solve this and come up with this expression. So Z mod greater than 0.5 का मतलब है now this point is out of the unit circle, so your system would become unstable. So you need to be careful because you might add, let's assume yeah 3 to raise power n is basically a noise and that is the multiplicative noise. तो आपका ओरिजिनल सिस्टम तो स्टेबल था, लेकिन जब मल्टीप्लिकेटिव नॉइज उससे मल्टीप्लाई हुई तो आपका सिस्टम अनस्टेबल हो सकता है. या लेट्स अज्यूम कि आपके पास सिस्टम के अंदर मल्टीपल इनपुट्स आ रही हैं, तो अगर उनमें से कोई एक इनपुट भी खराब हो जाती है, मीन डिस्टर्ब हो जाती है फॉर सम एरर और सम मे बी डिस्टॉर्शन, तो आपका सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा. So we need to
carefully consider this property. ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Okay, the fourth property is the time reversal property. Time reversal property says that if you have x of n and you know its z transform x of z with ROC is equal to R of x, and if you time reverse this signal, x of n के बजाय x of minus n कर तो it would be equal to x of 1 by z. तो जहां पे भी z आ रहा है आपने उसको 1 by z कर देना, and your ROC will be 1 by Rx. But आपकी यहाँ पे लिख दें कि ग्रेटर लेस में हो जाएगा. How I can write? Your ROC will be 1 by Rx, but आपका अगर सीक्वेंस राइट हैंडेड है तो वो लेफ्ट हैंडेड होगी, उसके बाद उसका ROC 1 by Rx होगा. ठीक है, जैसे Z mod ग्रेटर देन 0.5 था तो वो Z mod लेस देन 1/0.5 हो जाएगा. ठीक है, तो आपकी जो कंडीशन है ग्रेटर की वो भी रिवर्स हो जाएगी और आपके पास जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो भी 1 by Rx हो जाएगा. Let me, if there is some provisioning in the symbols, greater and less. जैसे ये ग्रेटर एंड इक्वल टू है ना, let me write these two for just for understanding कि आपकी जो कंडीशन जो है वो भी आपके पास, अगर आपके पास ग्रेटर है वो लेस हो जाएगी, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगी. Hopefully you will understand with the example. So let's solve an example. We take the same example 0.5 to raise power n u of n. We already know it's z transform 1/1 minus 0.5 z inverse, and it's z transform ROC is z mod greater than 0.5. Now, if we shift this signal in time domain, 0.5 to raise power minus n u of minus n. So x of minus n का मतलब है कि जहाँ पे भी n आ रहा है it should be minus n. तो यहाँ पे n आ रहा था, यहाँ पे n आ रहा था, तो minus n minus n. So what will happen in the z transform expression? It would be 1 over z. तो जहाँ पे भी z आ रहा है उसको आपने 1 over z कर देना है. तो simply यहाँ पे z आ रहा है तो हम 1 by z करके inverse को हम नहीं छेड़ रहे. We will remain it as it is. It will remain as it is. So z transform expression में आपके पास जो change आ रहा है, that is only here. Let me write it with this pen. So this is only change here, right? So what will happen in the region of convergence expression? तो यहाँ पे देखें तो this would be 1 by Rx, 1 by Rx, और यहाँ पे आपके पास जो ग्रेटर थी वो आपके पास किस में कन्वर्ट होगी है, लेस में. So अगर आपके पास राइट हैंडेड सीक्वेंस होगी तो that would be left handed and your ROC will be 1 by Rx, and हमारे केस में Rx क्या है 0.5. So 1 by Rx is 1 by 1 over 0.5. So 1 over 0.5 is 2. So z mod greater than 0.5 would change z mod less than 2. So what would be the expression? It is 1 over 1 minus 0.5 z. ठीक है बेटा? Clear है? Yes, sir. However, जब आप इस expression को देखते हैं, still same problem. It's not in the form of z inverse rather than in the form of z. So let's try to bring it in the form of z inverse and see how we can represent it in the form of standard expression. So यहाँ पे देखें आपके पास आ गया. If we take let me solve this equation. अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें further, so let me simplify this, remove this and take z common from the numerator. तो अगर हम z common लेंगे तो it would be, take z common, so it is 1 by z हो जाएगा. यही होगा बेटा, और यहाँ से ये z डिलीट हो जाएगा. यही आएगा बेटा.
Yes, sir. Okay, let's further solve it. अब यहाँ से ये z को आप ऊपर ले जाएं तो इट वुड बिकम z माइनस, और ये z इनवर्स बन जाएगा ये वाला z, और ये भी z इनवर्स बन जाएगा. So we can write it as z inverse, and this would become z inverse. Agree करते हैं? Yes, sir. This one. तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बच जाएगा. अब आपने क्या करना है, आपने -0.5 भी कॉमन लेना है, बिकॉज आपका 1 माइनस 0.5 जी इनवर्स है. तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, -0.5 कॉमन लेंगे. सो हाउ विल यू टेक -0.5 कॉमन? आप कॉमन लें, क्या एक्सप्रेशन बनेगा? Sir, 1 minus 2 into 1 by z. Let me take a razor and remove this. Oh yeah, I think enough space. Yes. Now we have enough space. It will not disturb like this. So in the next step, चलिए मैं इसके सामने कर देता हूँ. It should be equal to, अगर मैं इसे 0.5 कॉमन ले लेता हूँ, Control C. Let's take -0.5 common. When you take -0.5 common, so it would be 1 over 0.5 minus 1 by 0.5. आंसर का 1 by, चलिए हम डायरेक्ट ऊपर ही लिख लेते हैं. यहाँ पे नहीं आ रहा तो -0.5 इनवर्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1. ऐसे ही है बेटा. Yes, sir. और फिर आप इस -0.5 को ऊपर लेके चले जाएं तो इट वुड बी -2. So let me write it. So I can write -2 ऊपर मैं ले जाता हूँ, ये -0.5 यहाँ से खत्म हो जाएगा, and I can write this 1 minus 0.5 z inverse. Now it is in standard form. Let me write one more step. So I can write this as Control C. -2 आपके पास यहाँ पे हम ले लेते हैं डॉट, आपके पास ये आ जाएगा. ठीक है. अब आप अगर इसको देखें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, इसका इक्विवेलेंट बन जाएगा टाइम डोमेन में. ये आपके पास यही बनेगा -0.5 टू रेज़ पावर -n. ठीक है बेटा. ठीक है बेटा. Yes, sir. Okay, so with this discussion we conclude today's lecture. In today's lecture we covered 4 properties: linearity, time shifting, multiplication by exponential, and time reversal. We solved a couple of examples for each property to further refine the concept. Hopefully it will be okay for you. Let me stop the recording.